Hello everyone. I hope I am audible and visible. Just a minute, let me have a quick tech check. Yes, everything seems to be fine, and I am properly audible and properly visible. Okay, so let's have our news analysis. Sorry, मैं एक editorial पढ़ रहा था. That was compiled by News Laundry, right? That was related to Chief Election Commissioner. है ना? Okay, hello Rishparna. तो मुझे थोड़ा सा उसमें ज्यादा घुस गया मैं तो आई गॉट लेट आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी क्या ठीक है लेट्स हैव सम न्यूज़ राइट सो कल इलेक्शन था राइट असम में केरला में सॉरी केरलम में राइट एंड पुदुचेरी में now the thing is the elections turnout were great. I mean, there is an average 83% voter turnout in like a total, like all Milake. So Assam had approximate 78% voter turnout. Kerala has approximate 90%, right? And Puducherry approximate 85%. So overall fashion में एक अच्छा खासा voter turnout देखने को मिला. This is an excellent sign of democracy that people are practicing their voter right. And I hope they voted for the correct reason, the correct candidate, and for the correct party, not for the corrupt leader, corrupt candidate, and corrupt party. क्योंकि there are a lot of things that is going on in the country है ना तो कल के इलेक्शन की जो फोटोज थी फुटेजेस थी वो न्यूज में थी एंड वन ऑफ द मेजर पर्टिकुलर फुटेज जो न्यूज में थी वो थी असम के सीएम Himanta Biswa Sarma, right? HBS, that is what we call him, right? Or the reason was quite simple. He was discussing like after he was discussing something with the journalists after the voting, and one of the particular journalists from Milan Top asked one simple question about his language. It is non-parliamentary during the election, तो उसके लिए वो आदमी भिड़ गए. Then I again went through some of the editorial that was relevant to Himanta Biswa Sarma, and I got to know a lot about him, how he was associated with ULFA, one of the militant organization, how his name came into the TADA, the different kind of scams, right, and a lot of different particular क्या कहना चाहिए, issues that was with him. His issues with Rahul Gandhi, his scams during the time when he was in Congress, right? His scams during the time period when he was with BJP. He's with BJP currently. What is the allegation on his wife? How the things can be there. There is one political analyst जिनके ट्वीट से काफी कुछ चीजें क्लियर होती है कि देर इज एन इनसाइडर जो हिमंता बिश्वा शर्मा के पीछे पड़ा है बीजेपी में राइट ऐसा सुनने को मिला हाय तक तो कल हिमंता बिश्वा शर्मा काफी छाए रहे है ना so there was one particular group of people in the social media which was like making him a hero another was making him the villain right फिर एक और चीज न्यूज में छाई रही वो थे चाचा ट्रम्प राइट भाई ये आदमी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ ही इज नॉट फिट मेंटली राइट हाँ मतलब द वे ही इज एक्टिंग द वे ही इज गिविंग स्टेटमेंट द वे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग है ना देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि क्वेश्चन करने लगे हैं उसकी मेंटल हेल्थ पे आई मीन वो सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात बोल के उससे मना कर सकता है दैट इज व्हाट ही इज गोइंग ही इज डूइंग First thing. Second thing, JD Vance and his team has left for Pakistan, Islamabad. ईरान की तरफ से टीम जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएगी and then they are going to have peace talk. This is one of the best thing that is happening from last few days. क्योंकि भाई साहब बहुत परेशानियां चल रही थी राइट according to Citizenship Act in India, right? Yes, definitely. In Indian Citizenship Act, you can have only one citizenship. The allegation on Himanta Biswa Sarma's wife is to having golden visa and different passports, right? और उसकी अभी these are just the allegation तक है ना देखो सिंपली अगर मैं पॉलिटिक्स हटा के एक सिंपल प्रोसीजर की बात करूं द गवर्नमेंट हैज ऑल द डेटा रेलेवेंट टू हिम
अगर उनके पास इतने सारे पासपोर्ट और गोल्डन वीजा है तो गवर्नमेंट हैज नॉलेज अबाउट इट एंड इफ दे वांट दे कैन लाइक put her behind the bar and take action against her very quickly. But again, politics, ठीक है? Trump need to be locked up in an asylum ASAP. Not in asylum, he needs to locked up in an island, right, with monkeys only, right? हाँ, मतलब he needs to have some, what we can say, punishment. मतलब that man is not at all fit to be a leader of anything. I mean, his name is in that list, जहाँ पे like where the people actually exploited children, right? Physically, mentally, sexually, right? And then he initiated a war without any reason against one country, which was already suffering from sanctions. I'm not saying that Iran and Iran's regime was clean, right? They had a series of incidents where they suppressed people. I'm not at all supporter of Iranian regime, but I'm extremely against these kind of act of war which was completely unnecessary. अभी पूरी दुनिया जो है ना परेशान हो रही है. The war is going soon going to be over, and we are going to have big beautiful oil barrel. We have already won. They said, "Oh, we cannot fight the America." Oh, probably dumb. He will torture those poor monkeys too long. This can be a possibility. Right? So, मतलब पहले मुझे भी लगता था that these things are conspiracy, that the wars are done to what we can say deviate people from these kind of thing, Epstein file or something. But slowly, the way things are happening, the way administration is answering the question about why war, I started feeling कि नहीं यार these all these allegations, all these conspiracy theory कि this is just to deviate from Epstein file is correct. क्योंकि अभी कल ही मैंने एक एक्सपर्ट है सीआईए के जिनका एक रेगुलर वो आता रहता है वीडियो, फॉर्मर ऑपरेटिव एंड डायरेक्टर रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला बोले अगर वॉर खत्म हो गया तो बेंजामिन नेतन्याहू इज गोइंग टू बी इन द जेल because he is one of the most corrupt prime minister in the Israel. Donald Trump is going to face impeachment क्योंकि उसने ये हरकत की एंड देर आर सम साइंस व्हिच कैन बी सीन कि हाँ impeachment हो सकता है. डेमोक्रेट्स रिपब्लिक दे बोथ आर साइलेंटली कॉलिंग अबाउट अमेंडमेंट 25th, राइट, कि भैया हम किस तरीके से इसको हटा दें. मोस्ट प्रोबेबली जेडी वेंस इज गोइंग टू हैव पावर. It's just particular stories, right? तो चल रही है कहानी. खैर, Trump was in news for his mental health. Then India was facing strong inflation. India was facing strong sidelined by the international events that is happening. Earlier things used to be there, but Secretary Trump administration did it openly. Uh, uh, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है आकाश बनर्जी, राइट, उन्होंने दोनों चीजें बोली. द वे इजराइल एंड अमेरिकन आर डूइंग इट, हिटलर सीम्स टू बी लाइक बेटर पर्सन. हिटलर कम से कम छुपा के करता था ये सारी चीजें कि शहर के बाहर कर रहा है. देयर आर like not a lot of people apart from his inner circle knows about it. Countries do not know about it until and unless they have seen it. राइट, जनरल जॉर्ज पैटन जब वो इश्क विस्क के उसमें थे, जब कैंप में उन्होंने देखा तब जाके लोगों को पता चला था. बट दे आर डूइंग इट ओपनली. खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट. फिर इंडिया के लिए एक सीरीज ऑफ क्या कहने चाहिए प्रॉब्लम्स जो हैं दैट कैन बी सीन, whether that is inflation है ना, whether that is unemployment. कल एक एडिटोरियल पढ़ा मैंने कि इंडिया के फ्यूचर में क्या चीजें लाइक जीडीपी ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर एंड ऑयल प्राइस. राइट, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज अगेन बीइंग कॉम्प्रोमाइज. आई मीन थिंक अबाउट इट, the country which we targeted, which we projected as terrorist state, and after Operation Sindoor, we sent delegations to different nations just to sideline Pakistan, is now the mainstream country that is negotiating the war between US, Iran, and Israel, right? And peace करा रही है वो. तो पाकिस्तान ने ऐसा पीस कराया है कि क्या ही बोलो. I saw a video जिसमें Shahbaz Sharif was wandering around.
राइट एंड सबसे हाथ मिला रहे थे वो अपने लीडरशिप से एंड बाय द टाइम ही रीच टू द आई गेस फिफ्थ और सिक्स्थ पर्सन वो पीस ट्रूप जो है मतलब वो जो सीज फायर था वो इसराइल ने ऑलरेडी तोड़ दिया था खैर ये जोक था बट हाँ Israel is one of the countries जो ये चीजें कर रहा है so there is a lot of particular issues that is India facing and बदले में हमारी लीडरशिप जो है वो इलेक्शन लड़ रही है राइट यस दैट इज व्हाट दे आर डूइंग क्या ठीक है छोड़ो लेट्स नॉट डिस्कस दिस ठीक है सायरन सुनाई देने लगते हैं मुझे पॉइंट पे आते हैं सो दीज वर सम पर्टिकुलर थिंग जो न्यूज में थे फिर उसके बाद बंगाल एसआईआर जो है उसकी डिस्क्रिपेंसी जो है वो न्यूज में थी there were people who are reaching to the tribunal. The voter list has already been frozen, so there are going to be 27 lakh people who are going to miss the vote, and this is equivalent to 5% of total voters. And 5% is huge margin to change election result from one particular party to another party. And फिर योगेंद्र यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी योगेंद्र यादव वन ऑफ द फॉर्मर लीडर एंड करेंटली आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड थे एंड जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था उसमें इन्वॉल्व थे एंड ही इज वन ऑफ द वोटर राइट एक्टिविस्ट तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज दिखाई गई कि हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिट द पार्टीज डिफरेंट पार्टीज एंड लॉस टू द डिफरेंट पार्टी तो ये सारी चीजें जो है वो न्यूज में थी राइट कल के आईपीएल मैच में काफी मजा आया आई एम नॉट श्योर अबाउट यू अगर आपने नहीं देखा है तो यू डिड वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग बट कल के मैच में सच में काफी थ्रिल था Matlab, you have lost 6, 7 wickets. You are still behind like 60 runs, 50, 60 runs. And then one person came and he made all those runs except for 2 runs जो शायद आवेश खान ने बनाए थे मुकुल चौधरी not मुकुल रॉय Roy Mughal Chaudhary, that was the name of the player from Lucknow Super Giants. Right, and he changed the entire scenario of the match. काफी fun, काफी thrill भरा मैच था. Right, मैंने तो खाना बनाते बनाते देखा था and it was really fun. That was the news from yesterday. चलो कुछ important चीजें डिस्कस कर लेते हैं. Right, which have come to the news. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे important है that is the Western Asian conflict. सो यहाँ पे हम दो चीजें डिस्कस करेंगे राइट द सीज फायर द पीस वर्सेस द प्रॉब्लम्स राइट पीस सीज फायर वर्सेस द प्रॉब्लम सबसे पहले कुछ चीजें के बारे में बात कर लेते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ यू फॉलोड इट बट लेट मी टेल यू समथिंग so Israeli military attacked on Lebanon right and they killed more than 300 people. कल जब हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे and I told you कि लेबनान के ऊपर अटैक हुआ है कुछ 150 200 लोगों की डेथ हुई है. Now the death toll has risen to 300. Right? Yes. On a single day attack, 100 places, right, including Beirut and southern Lebanon, attack हुए. There were like series of missiles and clusters that were bombed, मतलब that were sent, and instantly approximately 150 people died, like injuring 1,000 people. Now the death toll within 24 hours has risen to 300 plus and 2,000 plus. And this is one of the particular event that is actually started shaking the world in a different way. The attack was brutal. I have seen bodies burning in the video. ट्विटर में कुछ ऐसे वीडियोस आए बाद में उन्हें ब्लर आउट करना पड़ा इट वाज शॉकिंग मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि द मोस्ट टेररिस्ट स्टेट इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड who doesn't want peace is Israel. And Israel was not happy with this ceasefire. That was also correct. Right. Pakistan Prime Minister has put a tweet on the Twitter, right, X. They mentioned about the condition of Lebanon, right, कि जो peace truce, जो peace है, ceasefire है, उसकी condition में this particular thing was mentioned that Israel and his allies, like Lebanon and others, they are also part of it. Suddenly,
Benjamin Netanyahu said कि Lebanon is not part of it, and the Americans, including GD Vance, जिसको आप थोड़ा समझदार मानते हो ट्रम्प से, he is also speaking the same language. So there are two, three major things जो यहाँ पे निकल के आते. First of all, the American people, अभी जो कैंट का मैंने कल वीडियो देखा था evening में, who clearly mentioned that the American foreign policy is driven by the Israeli and the Jew lobbies, right? तो ये एक बहुत ही गड़बड़ बहुत ही नेगेटिव न्यूज है अगर ऐसा हो रहा है तो देन द थिंग्स दैट हैपन विद लेबनान उसके बाद अमेरिकन सपोर्टिंग कंट्री फॉर एग्जांपल अगर मैं यूके की बात करूं फ्रांस राइट जर्मनी स्पेन Poland. There were several series of countries which condemned this particular attack, right? And they strictly asked, this is again like crime against humanity, the way things are going on. The Israel has to stop these kind of attack. It's a good sign that people have started talking about it, right? Ha, there are people who are like pro-Israeli now. They started questioning it. Why? I mean, you are bombing the normal civilians, you are bombing the. I've seen a video in which there is a couple that is walking by the sideways, and suddenly वहाँ missile struck होती है and their body shattered. Right? I have seen a video where people are doing the regular thing, एक building गिर जाती है after the attack, and majority of them are now no. So there is a lot of particular issue that is being there with the Israel. The good thing is people and countries started condemning it. These were the same countries which were silent when Gaza was getting bombed. But the good news is that now they are talking about it. Gaza has already lost 75,000 people, out of which 20,000 were children. The Lebanon has lost approximately 2,000 people, just approximate 300, 400 children there, and it's a huge number. Right? The children have nothing to do with the war. But Israel को ये चीज समझ में नहीं आती. And the most importantly, this country is the threat to the current ceasefire. They are not at all accepting it. Benjamin Netanyahu, if he will accept it, he is going to jail. That's for sure. And there is a video that was getting viral yesterday. It was, I guess, 2001 or 2002 video when he was not the Prime Minister of Israel. He clearly mentioned in Hebrew, YouTube में मिल जाएगा तुम्हें तुम ढूंढ सकते हो, right? That Americans are easy to manipulate. So that clearly means कि कहीं ना कहीं manipulation हो रहा है. तो ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना मतलब ये थोड़ा सा जो है वो सिचुएशन को खराब करने वाली है राइट एंड दिस इज समथिंग जो दैट इज गोइंग टू हार्म द एंटायर वर्ल्ड फिर देयर आर सम पर्टिकुलर कंडीशंस जिसके बेसिस पे ये पीस ट्रूप जो है वो होने वाली थी एंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो कल मैंने ईरानियन एम्बेसी की वेबसाइट से बात की थी जिस मतलब सॉरी ट्विटर अकाउंट की वॉल से मैंने उठाया था कि जहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं. So first of all, they mentioned about the term non-aggression. Just a minute. YouTube खोल लूँ तो मुझे comments नहीं दिखेंगे. Sorry. So they talk about the first term was non-aggression. They clearly mentioned about it that the non-aggression clearly means कि in future there is going to be no aggression against Iran or any of his allies जो कि उनके साथ involved थे इस particular current war में, right? Second one is continuation of control of Iran on Strait of Hormuz. यस सो वो जो प्रपोजल है कि $1 पर बैरल के पर्टिकुलर जो टोल है वो लेगा उस पे वो अभी भी स्ट्रिक्ट है राइट एंड दे वांट कि वो कंटिन्यूशन ऑफ कंट्रोल जो है वो बना रहे राइट दे आल्सो पुट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज यूरेनियम एनरिचमेंट. Yes, they said we are not going to make any nuclear weapon or weapon of mass destruction, but the continuation of Iran's enrichment program for the civilian purpose is there in one of the conditions. Right. Second, they said lifting of primary sanctions. Right.
Yes, this is very important because almost like this has been 40 years जब से ईरान इन प्राइमरी sanctions को झेल रहा है. Not only primary sanctions but also the secondary sanctions. So second primary and secondary sanctions क्या होता है थोड़ा सा समझ लो. Primary sanctions are those sanctions जो country के थ्रू या किसी organization थ्रू डायरेक्ट लगाए गए. Secondary sanctions are those sanctions जो उन countries पे लगाए जा सकते हैं जो उस country के साथ ट्रेड कर सकते हैं. एंड सिंपली तुम कह सकते हो फाइन के फॉर्म में. फॉर एग्जांपल यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, प्राइमरी टैरिफ. देन यूएस ने इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाया जब वो रशिया से ऑयल खरीद रहा था. राइट, तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि लिफ्टिंग ऑफ ऑल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस. राइट, then the Iranian wall also mentioned about the termination of all the proposal, right, against Iran in the against Iran in the यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. उन्होंने बोला कि जितने भी आपने प्रपोजल लाए हुए हैं, जितनी भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशंस हैं अगेंस्ट द ईरान इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑल आर सपोज टू बी टर्मिनेटेड. राइट, एंड जो IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इनके बोर्ड में जो रेजोल्यूशन ईरान के अगेंस्ट है, दैट इज ऑल्सो सपोज टू बी टर्मिनेटेड. उनकी लैंग्वेज इज क्वाइट सिंपल थी. टर्मिनेशन ऑफ ऑल द IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रेजोल्यूशन. Right. Next one, the payment of compensation for Iran against this war, because Iran was non-aggressive during the war, मतलब before the war. So उन्होंने compensation मांगा हुआ है, and that is quite simple, because there was a peace talk that is going on between the US and Iran, and they clearly mentioned it. We were not at all at that stage of war when you started attacking on us without any particular purpose. We were talking about peace. We were at the verge of completing that particular peace talk. So we need compensation for that particular war. And then next one, ये कुछ ऐसी हैं जिसमें शायद US एग्री ना करे. That is the withdrawal of US forces from the region. यस, उन्होंने सीधे तौर पे वो लिखा हुआ है कि विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन. उनका ये मानना है कि दिस इज अ थ्रेट, बिकॉज जो एलाइज हैं यूएस के, यूएई, कतार, सऊदी, कुवैत, they are some countries which is not at all friendly with Iran, and the presence of US combat forces make the security and the peace talk a bit critical and manipulative. And uski, they are extremely right on this. है ना. अगर बंदूक बनाने वाली कंपनियों के लोग प्रेजेंट होंगे कहीं पे तो वहां पे पीस नहीं हो सकता. राइट, देन दे clearly mentioned about the cessation of war in all front, right, including against the heroic Islamic resistance of Lebanon. This was Lebanon में strictly inverted comma के साथ बात की गई है. All the front including against the heroic Islamic resistance of Lebanon. तो दीज वर द कंडीशन जो ईरानियन जो मिलिट्री है, उन्होंने ईरानियन सॉरी एम्बेसी जो है उन्होंने रखा हुआ है. एंड दे आर वेरी करेक्ट ऑन दिस कि ये जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी चीजें बता रहे हैं, दे आर पॉजिटिव ऑन दिस. एंड कुछ चीजों को अगर छोड़ दिया जाए, फॉर एग्जांपल यूएस फोर्सेस के हटाने से लेके एंड बाकी सारी चीजों का, तो वो जो है उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा है जिसमें डिस्कशन नहीं किया जा सकता. Right, so that is what the news are, the conditions are. मैं simply तुम्हें बता रहा हूँ कि these are the conditions जो कि उन्होंने रखी है. Now, what are the developments अगर हम उसकी बात करें? The formal negotiation will start on 12th of April. Right, जो जेडी वैंस हैं, जो जेराड कुशनर हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, they have already been on the plane to land on Islamabad. प्रॉब्लम जो है वो जेराड कुशनर और विटकॉफ का है. दे बोथ वर पार्ट ऑफ द पीस डिस्कशन बिफोर द वॉर, है ना. और कुशनर तो ऑलरेडी प्रो इजरायली है. मेरे को ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो हैं उनके उससे बातों से लग चुका है. राइट. अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट और आया है कि द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अक्यूज ईरान डूइंग अ वेरी पुअर जॉब of allowing oil free through Strait of Hormuz. Right? Iran has warned of sea mines in the area and suggested imposing the transit fees, which Trump has warned against. तो अभी भी कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चनेबल हैं. मतलब द थिंग इज कि ट्रम्प and Trump administration, they are into that kind of thing.
जहां पे उनको ईरान के साथ पीस टॉक करना है. ईरान एंड Iran's what we can say action that is also can be seen quite simply that they also want to have peace, right? But there is one particular non-biological energy which is stopping it. Let's hope for the best कि जेडी वैंस को काफी लोग जो है ज्यादा अच्छे मतलब एक अच्छा लीडर समझते हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो अच्छा कुछ करके आए, नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी, है ना? अब जो वो है क्या कहना चाहिए है, जो रीसेंट अपडेट्स हैं उसकी बात करें तो यस, इसराइल अभी भी कंटिन्यूशन में है अटैक के. ईरान ने भी रिटेलिएटरी अटैक जो है उनको डायरेक्टली नहीं वो किया है, बट देयर आर थिंग्स व्हिच आर गेटिंग क्रिटिकल. यूएई की तरफ से एक अटैक आया था जिसका ईरान ने रिटेलिएट किया था, दैट वाज अ डे बैक. उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है. यूएस की तरफ से एक पर्टिकुलर हुआ है कि वट एवर ट्रूप्स वी हैव सेंट, राइट, वो वहीं पे रहने वाले हैं. सो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज वार्न दैट अमेरिकन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट विल रिमेन in the place around Iran, threatening that the shooting star if Tehran does not fully comply with the terms regarding the nuclear weapon and maritime sea. अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा जो कल मैंने देखा था, उसको आप समझो. हाउ द लैंग्वेज इज वर्किंग, right? Undoubtedly, Iran seems to be on the better place, the negotiation, and they are enjoying it. There are videos, people are doing normal life now, living normal life. They are sitting in cafe, sipping coffee, and etc. They are celebrating the ceasefire on the road, right, and everything. On the other half, people are still right against the Trump administration and they are on the road. They are protesting against American administration. The language of a Trump administration is still frustrating. मतलब चाहे ट्रम्प की बात हो, चाहे जेडी वेंस की बात हो, चाहे क्या नाम है उनका, कैरोलिना, जो यूएस व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं, देयर आर अदर पर्टिकुलर पीपल whose language seems to be frustrated because they are not at the better spot. तो अभी ये चीज है, both the parties are somehow showing that they emerge victorious. Right, Iran may seems to be in a better position क्योंकि इसके पहले Strait of Hormuz was completely open, free for all. But now Iran is in the position where it is negotiating for the toll. राइट, सो ईरान इज इन बेटर पोजीशन. यूएस ऑन द अदर हाफ, अगर मैं ओवरऑल कल की एक रिपोर्ट की बात करूं दैट वाज पब्लिश बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें उन्होंने लिखा था कि दे लॉस्ट अप्रोक्सीमेट $40 billion ऑफ इक्विपमेंट, राइट, एंड रेडार, लाइक इंक्लूडिंग रेडार, प्लेन्स, एयरक्राफ्ट कैरी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर चॉपर्स जो होते हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जो लॉसेस उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स में हुए हैं एक्सेट्रा. The operating cost of the war was approximate 40 to $50 billion, right? हाँ, जो इक्विपमेंट लॉस हुए वो तो हुए ही हैं 40 बिलियन के आसपास. जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी 40 to 50 बिलियन के आसपास हुए हैं. द मार्केट कैप लॉस ये बहुत सेकेंडरी है, बट देर इज एन एस्टिमेशन ऑफ $3 to 4 trillion जो मार्केट से लॉस में चले गए, राइट. और इन्फ्लेशन एंड गैस प्राइस राइज के कारण जो दूसरी चीजें महंगी हुई हैं वो अलग है. So there are a lot of things that happened against US. So US doesn't seems to win anything in that particular war. Talking about losses in Iran, so they lost approximately 3,000 people. इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता. Last time we discussed about the casualty, I guess 10-15 days back. At that time it was 1100, 1300 के around. So 3,000 losses जो हैं वो definitely दिखता है. They lost huge amount of civilian infra, जिसका कैलकुलेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल है. बट अगर मैं स्कूल्स, राइट, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, राइट, ऑयल फैसिलिटी, इन सबको कैलकुलेट करूं तो दैट आल्सो समहाउ बीइंग अकाउंटेड फॉर लाइक 70-80 बिलियन डॉलर्स. तो वो तो हो रहा है, वो ईरान को भी हुआ. सो बोथ साइड हैव सीन दोज लॉसेस. वॉर से किसी का फायदा नहीं होता, दैट इज करेक्ट, है ना? पॉलिटिशियंस का फायदा होगा, कुछ लोग जेल जाने से बच जाएंगे माहौल बना के ना, लाइक दिस. सो बोथ द पार्टीज आर सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर सीज फायर एंड पीस टॉक, और दोनों के पास अपने अपने रीजन है. देयर इज वन पर्टिकुलर थ्रेट टू दिस पर्टिकुलर पीस, एंड वो मैंने बहुत डे वन से बोल दिया था कि वो कहीं ना कहीं कौन है, इसराइल है.
तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। क्रूड ऑयल थोड़ा सा संभला है, अप्रोक्सीमेट $105 पर बैरल जो है वो एवरेज पहुंच गया। जस्ट अ मिनट, मैंने नोट भी किया था, द ब्रेंट क्रूड ऑयल इज ट्रेडिंग नियर $98 पर बैरल, राइट, एज ऑफ April 10th। तो एक सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा ऑयल संभला है। द मार्केट्स आर ऑल्सो बीइंग stabilizing, but not at all stable. Volatile condition में है, but better performing हो रहे हैं. So it's a good sign for international economy. इंडिया में ऑलरेडी उस इकोनॉमी उस वॉर का लॉस जो है वो देखने को मिल चुका है. सो दैट वाज व्हाट द मेजर पर्टिकुलर अपडेट्स ऑन द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट. अब अगली अपडेट अपन कल से थोड़ा सा इसमें 2 दिन के लिए ब्रेक लगाएंगे, इफ वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट, राइट. सो ये तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम ऑलमोस्ट 45 डेज से ये डिस्कशन कर रहे हैं. तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फॉर द वेरी वेरी स्मॉल टाइम. वी विल फोकस ऑन अदर पर्टिकुलर न्यूज, एंड इफ देयर इज अ लार्ज और एन इंपॉर्टेंट इवेंट हैपन देन वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अभी क्या चल रहा है एंड क्यों चल रहा है, राइट. So that was the update for the Western Asian conflict. And overall newspaper में कुछ खास वैसा नहीं था. Let's revise the newspaper. Huge voter turnout in the election, ये अपन ने बात कर ली थी, right? Whether that is Kerala, Assam, Puducherry, approximately 83% average voter turnout. It's a very good sign for the democracy. I hope the elections are fair. This election stays fair. ईरान रूस teeters over the Lebanon Strait of Hormuz. करेक्ट है भाई, वो अपन बात कर चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और लेबनान जो है उस पे पॉइंट हो रहे हैं. वेस्ट एशियन वॉर कट्स इंडियाज ग्रोथ आउटलुक टू 6.6%. पहले दिस पर्टिकुलर ग्रोथ लाइक आउटलुक वो 7.6%, एंड दैट इज ऑलरेडी लोअर द जीडीपी ग्रोथ बाय 1%. अगर ये वॉर और कंटिन्यू होता है तो दिस इज समथिंग जो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. Retail inflation has risen to 4.9%, एंड ये जो है ये काफी क्रिटिकल हो सकता है, बिकॉज जब डेली यूज की चीजें महंगी होती हैं तो इट एक्चुअली अफेक्ट्स द कॉमन मैन. एंड यू आर वेल अवेयर अबाउट इट दैट इंडियाज 90% पीपल आर आइदर इन द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास. ठीक है. सीबीआई may question the convict Sanjay Roy in the Arjikar Medical College rape case. Calcutta High Court. Yes, remember that particular rape case in which doctor in the Arjikar Medical College, what we can say, resident, right? She was raped and brutally killed. And फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा उसको छुपाने की कोशिश की थी. ममता बनर्जी सेट ऑन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट्स ओन गवर्नमेंट, ओन एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऐसा हुआ था, है ना. तो चीजें हैं, अब उसको सीबीआई की हैंडल कर रही है. एंड हाय प्रिया, राइट. एंड अभी जो है उससे पूछताछ हो सकती है. संजय रॉय वाज द प्राइम अक्यूज. इवन द मैन्युफैक्चरिंग of fab was all time high. Editorial was cheerful until the war. Yes, Daksh, there is a lot of challenges जो भी आने वाले हैं. Even if the war stops and the flow regularize, तब भी वो 1.5 महीने के लिए 1.5 2 months, that is not going to come on that particular stage जो पहले था war. जो फ्यूल है, जो बाकी चीजें हैं, वी आर गेटिंग इनटू द खरीफ सेशन, फर्टिलाइजर्स ही होंगे. If the production yield is low, then definitely the price will be high and it's going to affect common man, that's for sure. Double murder in Bihar, but BJP, JDU vying for the CM seat. बिहार में डबल मर्डर हो रहा है, और दैट इज द प्रॉब्लम. बिहार इज लाइक बिहार पॉलिटिक्स में देयर इज गोइंग ऑन सम मिस्ट्री और थ्रिलर काइंड ऑफ सीन where the CM Nitish Kumar has reached to the Delhi and now he's going to take oath as the Rajya Sabha member, right? And there is no particular person who's going to be in the CM post, but कौन होगा कौन नहीं होगा इसी में चल रहा है. प्रिया का क्वेश्चन क्या है? Is it true that West Bengal that around 91 votes were cut off? Yes, there were 91 lakh voters that were cut from the electoral roll, and that accounts 12% of total voters. काफी बड़ा वो है, right? And then कांग्रेस लीडर डिस्कस द चेंज इन वुमेन कोटा. सो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चीजें
मतलब उस पे डिस्कशन हो रहा है क्योंकि डिलिमिटेशन होना है, दूसरी चीजें होना है. So have you noticed how study you will not find videos or anything about 21, 22, red food vandalism, it suddenly stuck my study, how everyone forget that. 21-22 किसान प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन की तुम बात कर रहे हो. नहीं, वीडियोस को रोका गया है, मतलब द रीच हैज बीन डिक्रीज्ड उन लोगों की, बट है, वीडियोस हैं. ट्विटर में मिल जाएंगे अगर तुम हैशटैग करके सर्च करोगे तो. एंड यूट्यूब में भी अवेलेबल है. देयर आर सम वीडियोस जिन्हें रोका गया है, दैट इज श्योर. Privilege committee asked Kunal Kamra to give apology. I'm not sure he's going to ask. ठीक है, क्या कर सकते हैं. Nitish leave for Delhi may resign as Bihar CM after oath, but we don't know who's going to be the CM. Okay, yesterday I saw a tweet from one of the political commentator where the BJP party, the current ruling party of the Assam, have promised about giving a buffalo and a cow to the tribal people, and they are not promising about a good education, good employment, and good growth of the state. So there were people who started discussing on it, ki whether they are supposed to be allowed to make such kind of promises or not. फिर people have started listing series of promises by different leaders जो उन्होंने किए थे और कभी पूरे नहीं. राइट, तो मजा तो है ना. May his son might be the CM of Bihar. Yeah, I don't think his CM is going to be the his son is going to be the CM of Bihar. Politics is a bit cruel, है ना. फिर Congress slams union government over withdrawal of the host of COP33. We discussed about it कि 2028 की जो Global Environmental Summit which we call Conference of Parties 33, हमने कल डिस्कस किया था कि Indian government was bidding to host that particular summit, but suddenly the union government decided to withdraw that bid. So कांग्रेस जो है उसको एक और पर्टिकुलर फेलियर बता रही है फॉरेन पॉलिसी का आफ्टर दिस पाकिस्तान फियास्का हैपेंड. राइट, पाकिस्तान पीस करा रहा भाई. वो चाचा सही थे जो कह रहे थे कि 26 में तो दुनिया खत्म है. मेकिंग स्कॉलरशिप इंटीग्रल टू द स्टडी एकेडमिक इंडियन एकेडमिक कल्चर, ये एक अच्छा वो एक बार पढ़ना है कि किस तरीके से हम ज्यादा वो कर सकते हैं. ऐसा ही यार, नॉट गवर्नेंस डोमिनेटिंग डोमिनेट्स पॉलिटिकल डिस्कस इन द पोल बाउंडेड बंगाल. ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है. वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक पर्टिकुलर कंडीशन, सुहासिनी हैदर ने लिखा, बहुत प्यारा एडिटोरियल, आप पढ़ना इसको. हैव इलेक्शन बिकम प्लूटोक्रेटिक. ये तुम डिसाइड करना आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू. ठीक है, चले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इकोनॉमिक न्यूज में कोई खास वो नहीं है. राइट, मतलब वही चल रहा है कि कहीं लॉस है कहीं नहीं है. अब भैया मुझे ये न्यूज बहुत पसंद आई. आई लव VW कार्स. Volkswagen cars मेरी favorite है, German, especially जो German car होती है. And they are saying कि they are going to introduce a new car in every quarter. Let's hope for the best कि कुछ अच्छा निकल गया है. एक Volkswagen T-Roc आई है यार यूरोपियन यूनियन में, येलो कलर की, कैनरी येलो कलर की. भाई क्या ही खूबसूरत कार है, बट इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाली. इफ दैट पर्टिकुलर कार इज लॉन्च इन इंडिया, मैं नेक्स्ट डे जाके बुकिंग करा दूं. And it's just first 3 months of the year, so many CA topics it's going to down in history. मैं कह रहा हूँ कि क्लैट वालों ने ना इस साल का क्लैट जो है वो भी प्रॉब्लम में रहेगी. कितने सारे टॉपिक है, कौन सा पूछूं. राइट, ईरान वॉर डबल्स द रशियाज मेन ऑयल रेवेन्यू टू द $9 billion इन अप्रैल. Scenario समझो, there was a time when Russian was supposed to be sanctioned for their oil and for their action. Right now, the Americans were so much into the negative position in this war, they allowed Russian oil to be sale. Now Russia is earning $9 billion. 26 में तो genius guys. Same particular thing, Israeli military kills secretary of Hezbollah chief in Beirut strike. Group rejected direct talks between Lebanon, Israel says Hezbollah MP. All right, Nepal issues arrest warrant on the ex-PM Duba for the corruption probe. ये जो वो है क्या कहना चाहिए, नए प्राइम मिनिस्टर है, राइट, बालिन शाह बालिन. राइट, ही इज कल ही का वो था, क्या कहना चाहिए, एक वीडियो ट्विटर में देखा था कि हाउ
He is acting similarly to Anil Kapoor's Nayak. Right. Worried by hits on Iran's nuclear site, says IAEA Grossi. तुम कहाँ रहते हो? I mean, international agencies, they started vanishing suddenly. There were like 2.5 years of genocide in the Gaza. There was no agency that put something concrete on the table against it. Now there are unnecessary wars and aggression, whether that is Russia, Ukraine, Iran, Israel, or Iran, Israel, Lebanon, right? And any particular thing. Nobody is doing. Suddenly इनके statements आ जाते हैं. That's it. US Iran troops on the shaky ground. अपन इसकी discussion कर चुके हैं. Israel strike in Lebanon sparks the condemnation from the right bodies. जरूरी था US military to stay deployed in the near Iran. ये भी अपन ने बात कर ली थी. Russia is supporting Iran from the Caspian Sea channel. Russia is supporting Iran from the very different channels, right? Whether that is intelligence, whether that is technical support, financial support, buying oil. There are a lot of things. ठीक है. Finland plans to bury spent nuclear waste, carries the risk for the future generation. कहीं कहीं पे अच्छी चीजें हो रही हैं कि भाई हम फ्यूचर जनरेशन को सेट करने के लिए अच्छे से वो करेंगे. क्या कहना चाहिए, न्यूक्लियर वेस्ट वो करेंगे. एंड कहीं पे जिस कंपनी को बैन किया गया बाहर से, वहां पे उनका प्लांट लगाने की बात हो रही है. मैं नाम नहीं लूंगा कंट्री की. सीडी गोपीनाथ, इंडियाज ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, पास्ट अवे. Yes, he was 96 and 52 के टाइम पे, 1950s 40s के टाइम पे he was the player. And मतलब क्रिकेट, एज अ क्रिकेट फैन, दिस वाज वन ऑफ द न्यूज़ जो मैं नहीं चाहता था, बट ठीक है. अब एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? एंड दिस वाज द मैच आई एम टॉकिंग अबाउट. भाई साहब, अलग ही लेवल पे ये आदमी मुकुल चौधरी लेके गया था. I mean, he hits, I guess, seven sixes, two fours in his 54 runs knock. Right, so like 42 plus 8, 50 runs he made from the boundaries, and he played 27 ball. ऐसा नहीं था, he had, like, he put himself in that situation where he wanted to stay and win. So he played those ball very perfectly, जहाँ पे उसे छोड़ना चाहिए था या अच्छे से रिस्पेक्ट दे के वो करना चाहिए था. And then जहाँ पे जरूरत थी वहां पे वो स्ट्राइक भी कर रहा था. It was a fabulous match. This guy very well, very good. आयुष खान आए थे भैया, उनको 3 बॉल ही खेलने को मिले. So it was a good match. मजा आया मुझे. So that was the news for today, right? अपन आर्टेमिस सीरीज कवर करने वाले थे, बट केशव सर ने उसको कर लिया तो अपन ने डिस्कशन नहीं किया. शांति एक्ट जो है उस पे मैं वीडियो बना दूंगा एक प्रॉपर उसके साथ, तो तुम्हारे पास डेटा भी रहेगा. एंड रेस्ट एक वीडियो जो है जल्दी से इन इन इंडिया, सॉरी, यूएस ईरान पीस टॉक पे भी आने वाला है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अपन अच्छे से वो करें. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, हैव अ ग्रेट डे अहेड. मजे करें, खूब सारी पढ़ाई करें, एंड सी या गाइस, गुड डे.